telling you exactly कि आपको क्या करना है और पीछे से pump up आपको कर रहे होते हैं. And so a lot of people join in, you know. Hydro is a friend of mine. I joined in. Oh, you did? No. Yeah, I totally joined in. I joined in twice with you. I even messaged, मैंने Hydro को message किया था कि I'm really enjoying this. The whole मैंने पूरा neck से तुमने शुरू किया जब तुम अपना neck वाली चीज करती हो, फिर side वाला बाजू वाली चीज करती हो, मैंने सारा किया. Wow. Yeah. Of course, I've met you at Hydro in Karachi when you were in Karachi, and you, of course, you know who he is. Yeah. But also, can I tell you, बड़ा मजा आता है किसी के साथ को exercise करने का, because मैं भी हर रोज exercise करता हूँ 1 घंटे के लिए. And आपको पता है जितना मर्जी अभी कह लें, I know हम लोग कब से कह रहे हैं, this is great, connection, me time बड़ा जरूरी है, family के साथ बड़ा जरूरी है, अब अच्छा लग रहा है कि हम अपने साथ वक्त गुजार रहे हैं. मगर मैं honestly बताऊं, अब मैं थोड़ा सा कुकू होना शुरू हो गया हूँ. मुझे लोगों की communication की जरूरत है. तो जब तुम एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे लग रहा था कि हाँ मैं जिम में हूँ, हम सबके साथ हूँ. थोड़ा सा मुझे जरूरत थी. Yeah, that's the idea, Sheru, because I mean, मेरी तरह, I'm sure there are lots of people out there जो बिल्कुल अकेले हैं. I'm completely alone at home. No family, no help, no domestic staff, no, like, I don't even drive, so I don't have a driver, so, you know, I'm completely alone. And this is... Wow. Yeah. And way to, you know, tell other people that they're not alone in that alone situation. There are lots of other people out there. And interaction, live interaction जो होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है, you know, when it's in real time. So, you know, of course, I go check out other people's workouts कभी कभार, जो है ना, it's also very tricky. क्योंकि आप कुछ गलत कर दो, आप कुछ you know, कुछ गिरा दो, कोई चोट लग जाए, कोई क्रैम्प पड़ जाए, we can do anything. So it's Yeah, I just walked to the bathroom while talking to you as well, because bathroom में अभी आजकल मैं इतना conscious हुआ हूँ everything. मैंने कहा, I swear to you, while I was talking to you, I was like, wait, did I leave the tap on while I was just coming out? While I was talking to you, I was like, बातें भी सुन रहे हैं, वहाँ पे जाके oh नहीं, मैं tap on क्या. I mean, मेरा दिमाग भी इस वक्त कुकी, and you're right, live करते हुए बहुत मुश्किल होता है. I mean, for example, ये तो हम normal conversation कर सकते हैं, Aisha. You and I speak a lot. जो लोग नहीं जानते, we've known each other from back in the Lahore days. Or plus, all your friends are my friends, and all my friends are your friends. So we hang out a lot. But ये live करते हुए, it's a lot. You're putting yourself out. एक दूसरे से वो खुल के भी बात करना चाह रहे हो, जो हम लोग normal करते हैं, मगर थोड़ी सी restriction भी है, because आप you know, you don't want to offend anyone, you don't want to you don't want to say anything inappropriate, and दोस्तों में inappropriate बातें तो हजार हो जाती हैं. And बताओ. No, you're absolutely right. When you go live, putting yourself out there, and एक बड़ी vulnerable सी जगह होती है जहाँ पे, you know, you're also opening yourself up to all sorts of comments and all sorts of feedback, which is great also. You know, I love the feedback. लेकिन उसके साथ साथ generally, you know, us who work on television, हम वैसे ही अपने आप को एक vulnerable position में डाल रहे होते हैं, you know, when you're out there. So I feel that going live has its, you know, tricky parts as well. You're right. और कभी कभार आप किसी से बात कर रहे होते हैं, and because they're a friend, and आपकी relationship उनके साथ बहुत informal सी है, so your brain sometimes forgets कि this is not a video call. This is like going out to people, and people are watching in their homes, and they're listening, and they're observing, and they're, you know, going to give their feedback, and that's great. But आपको definitely, you have to be careful. You have to watch what you're saying. You have to be correct, politically correct. You have to be ethically correct in a lot of things. You know, हम दोस्त आपस में एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं कि यार क्या मतलब यार मैं बड़ी मोटी हो रही हूँ यार, you know, we can say things, anything, and anybody can pick it up and be like, oh, this is not good. Yeah. So one has to be very careful.
One has to be very careful. Yeah. But मैं तो एक बात बताऊं, मुझे क्या लगता है कि अब रूल्स चेंज हो जाने चाहिए, बिकॉज हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, ये सिचुएशन कभी थी नहीं हमारी, ना जिंदगी में रही है, ना हमारे किसी जानने वाले की जिंदगी में रही है. These rules of engagement didn't exist. अब मैं कल ओबी से बात कर रहा था एंड वो भी ये कह रहा था, और मैं शहरयार से भी बात कर रहा था एंड ही वाज सेइंग दिस टू, एंड दे आर बोथ फ्रेंड्स ऑफ योर्स. दे वर सेइंग द सेम थिंग कि यार शिरू, इस वक्त वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की समझ नहीं आ रही, स्पेशली ओबी. क्या इस वक्त हमने हर बंदे की सेंसिटिविटी को देखना है, या इस वक्त मैं अपने सेंसिटिविटी को बारे में भी सुनूं? Are my emotions also the same? Yes. क्या शायद हम सबके जैसे इमोशंस हो? You know, that's सबके जैसे such... इमोशंस है. अभी तो मुझे Yeah. बात... No, say Go it. ahead, tell me. No, that is such a valid point. No, you were saying something to me earlier. Yeah, it's such a valid point that, you know, everybody is facing this situation together. We're all human beings. हम सबको का हर मतलब सबको उसी लेवल पे फिक्र है, ख्याल है, right? So this is like, there's no okay, oh, you're on TV or you're doing this or you're in this line of work, तो आपकी feelings या आपकी situation या आपके circumstances फर्क है. इसमें of course we are very very blessed, शेरू, that हमारे सर पे छत है, हमारे पास मतलब के है, हमारे पास दोस्त हैं, हमारे पास इंटरनेट है. we're very blessed. we're, you know, and we're healthy right now. लेकिन जो एक फ्यूचर का और एक प्रेजेंट सिचुएशन का फियर है, that is causing a lot of anxiety amongst a lot of people. And sometimes everyone, Asha. Yeah. Everyone. And they're not even... बहुत से लोग अभी लिख रहे थे, ज़्यादातर तुम... go ahead. No, I'm saying people don't... कोई realize ही नहीं कर रहा इस वक्त कितनी anxiety है. Yeah, people are not realizing कि अगर हम एक certain way में feel कर रहे हैं, maybe उसका trigger कुछ है, but उसका जो पीछे जो एक underlying reason है, that's like you're just feeling very very anxious and stressed. And then another reason why I think people are very very even more anxious than usual is social media. You know, we are stuck at home and we are fine. It's a blessing. We're connected through the internet. We're physically distant, but we're not socially distant. You know, we get to talk to our family, talk to our friends. But social media is also now, everybody's really frustrated. Everybody's very anxious. So a lot of that is coming out. Just screen time. This connection is just horrible. I know. You know what? I think I'm going to get off Wi-Fi.